Hello everybody and we are back live again and आज हम लोग फिर से after so many days we are again live since इतने सारे दिन हो चुके थे and we weren't actually able to discuss about various lots of topics about physics as well as mathematics and any field of education of course. So here I guess there's someone arrived already there. So today will be a lot fun. I guess it's been more than 2 months or something like that. So that's first chat. Pampi Priyasi, hello bro, hello. Then Ginata Maharaj. Then the two supermassive black hole get collide and their singularity explodes awfully with infinite energy and matter. That were a universe was born. Me. Wow, that's a great thought. It might be possible कि ऐसा हो सकता है कि जब दो supermassive black holes collide करते हैं तो उसकी वजह से जो energy produce होती है तो ऐसा हो सकता है कि वहां से यूनिवर्स बन सकता है. देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था. नथिंग इज कंफर्म्ड येट एज लॉन्ग एज वी हैव आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो जब तक हमारे पास एक कंप्लीट क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी नहीं होती तब तक हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि बिग बैंग से पहले क्या था. बट देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स लाइक दैट इन दिस आल्सो अ ग्रेट वन. Then there is Mohammed Ahfaz. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. There is ITZ Legend Star. Hi. Hi. And there are all hi and hello right there. So the medical boy Shahid. Hello bro. Hello. Okay. This is Tanjiro Heaven. Tanjiro Heaven. Study pure mathematics also. You'll become the best in physics after that. Well, yeah, nowadays I'm also studying pure mathematics along with that, along with applied mathematics. And यहाँ पे एक क्वेश्चन की अभिषेक कुमार ब्रो, व्हाट इज डार्क एनर्जी. वेल डार्क एनर्जी क्या है कि ये जो कंसेप्ट था ना कि जो हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड करता है. द क्वेश्चन वाज कि ये कैसे एक्सपैंड करता है. इसके लिए कोई ना कोई फोर्स या फिर एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए कि हमारे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है. तो यहाँ से थ्योरी आई कि ऐसा हो सकता है कि देयर इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमारे यूनिवर्स को एक्सपैंड करने में हेल्प करता है एंड दैट्स डार्क एनर्जी. सो दैट इज वकाश राजा क्वाड्री. सारिम भाई कैसे फिजिक्स कैसे पढ़ूं बताओ ना प्लीज. वेल फिजिक्स को पढ़ने का सबसे अच्छा जो तरीका है दैट इज पहले आपको कंसेप्ट्स लर्न करना है. उसके बाद जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स हो सके. ऑल्सो नॉट अ लॉट कि आप बस न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करते जाओ. पहले कंसेप्ट्स को क्लियर करना है फिर न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करो एंड देन यू कैन डू वेल इन फिजिक्स. न्यूमेरिकल्स उसी टॉपिक पे लाइक से आपने अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर किया तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे न्यूमेरिकल सॉल्व करो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉरिजॉन्टल रॉड अबाउट अ axis perpendicular to this line or something like that passing through center of mass. फिर आप फॉर अ लैमिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो. फॉर अ क्यूब और समथिंग लाइक दैट निकाल सकते हो. दैट इज पाम्बी प्रियासी. व्हाट इज कैपेसिटर. वेल एक कैपेसिटर एक ऐसा काइंड का डिवाइस होता है जिसके पास एक कैपेसिटेंस होता है जो कि चार्ज एज वेल एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है. कैपेसिटर बहुत यूजफुल होते हैं एंड इंडीड जो हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं डिवाइसेस इनमें बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं. लाइक से फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं जब हम लोग कोई भी फोटो शूट करते हैं रिमेम्बर कोई भी फोटो शूट करते हैं तो वहाँ पे एक सडन फ्लैश ऑफ लाइट आती है. वो फ्लैश ऑफ लाइट कैसे आती है कि ना जब हम लोग फोटो शूट करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है. तो एज वी आर क्लिकिंग ऑन द बटन बाद में वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होती है वो लाइट के फॉर्म में आती है एंड दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. दैट इज कि पहले उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोगों ने फोन के कैपेसिटर में कैमरा के कैपेसिटर में स्टोर किया फिर उसे रिलीज किया. Okay, this is ITJ Ashish. Do you think that there is any law or principle on which our whole universe depends upon? There are two basic theories, two fundamental theories in modern physics जो कि अभी तक हम लोग समझ रहे हैं. That is the general theory of relativity along with quantum mechanics. लेकिन प्रॉब्लम है कि ये दोनों theories cannot really work well with each other. तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि अगर हम इन दोनों theories को किसी तरीके से यूनिफाई कर सके तब क्या हो सकता है. हमारे पास एक सिंगल थ्योरी जो कि पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सकती है मिल जाएगी. दैट इज अ क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, अ कंप्लीट यूनिफाइड थ्योरी और अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग. सो आई पर्सनली बिलीव कि ऐसा यूनिफिकेशन पॉसिबल है. while कुछ लोग I don't think that I haven't
I don't think I have ever met or talked to such a person जिसे ये नहीं believe होता है. But there are indeed few people who do not believe even in physics. But yeah, मुझे believe है. मैं believe करता हूँ कि there is a single complete unified theory. Okay. Here is all things question. What is your opinion on the oldest star on the universe? Well, that is quite a good question and a tough question. I will be very honest. मुझे नहीं पता कि universe का oldest star कौन सा था, the first star of this universe. लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक, what I personally believe कि जो first star of the universe होगा, वो अभी तक destroy हो चुका होगा. That is formed into a black hole or something. लेकिन अगर ब्लैक होल के केपेबल नहीं तो इट माइट हैव गॉन इनटू अ न्यूट्रॉन स्टार, नॉट इवन न्यूट्रॉन स्टार, सो वाइट डॉर्फ और समथिंग एक्सप्लोडेड और इम्प्लोडेड और एनीथिंग लाइक दैट. मुझे नहीं लगता अब तक उतना उस ओल्ड स्टार दैट इज द फर्स्ट स्टार से राइट आफ्टर द बिग बैंग फॉर्म हुआ. सो दैट वाज 13.7 बिलियन ईयर्स अगो. मुझे नहीं लगता कि अभी तक सर्वाइव कर सकता है. ओके, एंड हियर इज Abdul Khadir, how do you explain string theory? Well, string theory एक ऐसी theory है which says कि unification possible हो सकते हैं of Einstein's general relativity and quantum mechanics. I wouldn't say Planck's quantum mechanics or Heisenberg's only quantum mechanics, क्योंकि quantum mechanics पे तो इतने सारे physicists ने work किया. तो string theory basically क्या कहती है कि अगर हम matter at its most fundamental level ले लें कि ये पॉइंट पार्टिकल नहीं है, बल्कि जो पॉइंट हमें दिखते हैं अगर और यूनिफाई करते जाएं, तो ये एक्चुअल में कुछ स्ट्रिंग्स होंगे, वन डायमेंशनल स्ट्रिंग्स, द लूप्स ऑफ स्ट्रिंग्स. अगर हम मैटर को कुछ ऐसे कंसिडर करते हैं तब ग्रेविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. दैट इज व्हाट स्ट्रिंग थ्योरी इज. एंड इवन जो हमारी इक्वेशंस ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी, अब लिसन व्हाट बेसिकली हैपेंस कि उसके इक्वेशंस इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हम सिर्फ अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी के इक्वेशन. बट नॉट जस्ट दिस, उसके इक्वेशन के डेरिवेशंस भी इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि जो हम लोगों ने इक्वेशंस भी डिराइव किए वो भी बस अप्रोक्सीमेट इक्वेशंस है. सो वी हैवंट गॉन टू रियल स्ट्रिंग थ्योरी के इक्वेशंस और उनके सॉल्यूशंस येट. बट स्ट्रिंग थ्योरी एक्सप्लेन्स एवरीथिंग so nicely in such a brilliant way. So basically many physicists believe in string theory, many don't. Like there are so many great physicists like Michio Kaku, Brian Greene, Michael Green, Edward Witten, who have contributed to so much to string theory. Vikas, how James Webb Space Telescope JWST can see before Big Bang? Now it can't see before Big Bang. Rather, it can also see what happened after Big Bang. Well, JWST ये basically ये infrared rays को भी detect कर सकता है. So basically क्या होगा कि जो हमारे पास light आ रही है from many billions of years ago, millions of years ago, ये उसे detect कर सकते हैं, यानी कि it can see in the past. So basically what will happen कि हम लोग past में देख सकते हैं, but no light has ever reached or will ever reaches जो कि before the Big Bang की है. So I don't think James Webb Space Telescope can actually see before Big Bang. This is Ganesh Kichade. Will you share your Gmail? Well, the Gmail ID is mohasinkhan25@gmail.com. वो आपको इस चैनल के अबाउट में मिल जाएगा. This is all things oldest star in the universe 14 billion years, while this universe is 13.08 billion years ago. Well, that seems rather contradictory to logic. Here is Shivam Yadav official. किसी भी टॉपिक को जल्दी याद कैसे याद करें? किसी भी टॉपिक को जल्दी, well, I'm not very much into learning and all, क्योंकि I am in the field of physics, तो I rather consider more of understanding कि कैसे हम concepts को ज़्यादा understand कर सकते हैं, rather कि हम उन्हें learn करें. But still to learn any topic, first of all हमें उसके concepts understand होने चाहिए. That is कोई भी topic ऐसे आपके पास center of mass है, तो आप center of mass के concept समझो,
and then you can easily understand the equations and all. Here's Nirman Khan. Explain how Feynman's sum over histories reformulated the whole quantum mechanics. So that's a good question. Uh, so I'll try to explain it as best as I can, as well as I can. So Feynman की sum over histories, how they reformulated the entire quantum mechanics. Well, what basically earlier happened कि quantum mechanics, all the mathematical principles, mathematical equations of quantum mechanics, they were way too complicated to solve. The equations were really complicated. And if we are also trying to understand all of them by logic, so it would seem contradictory. Like take the double slit experiment. So double slit experiment, in the double slit experiment, what basically happens when you are not looking at the electron, so you don't know where the electron is passing through which of the slit, and to explain what is happening with the interference of electrons. So how is it actually happening? Even if you are passing one electron at each time, still there is interference of electrons. So how is it all happening? So what Feynman said using his sum over history is that you don't know where is the electron exactly. Indeed, as long as you are not looking at the electron, so what basically happens that the electron can be anywhere, not just in the slits, not just going through a straight path that you are really send the electrons through. Rather, it might also be possible the electron is not on Earth. The electron is going around the solar system. It is going through the Andromeda galaxy. It is going to the edge of the universe and then returning back and passing through one or both of the slits. That is what Feynman's sum over history says. And once you're familiar with this concept, what then it can actually say is that if the electron is passing through both slits at the same time, so it is possible that is happening the interference of electrons, and then you can easily explain this Young's double slit experiment with electrons. Whereas if you are using the classical say representations and all the classical theories of interference of electrons passing through all this, so you can't actually well explain all of this. That is how Feynman's sum over histories reformulated the entire quantum mechanics. And also along with that, since the double slit experiment had been done previously with light waves in the time right after Sir Isaac Newton, in the time of Thomas Young and all, but later on what basically happened was that recently it has been done even with neutrinos, and that is a real great discovery that the double slit experiment has been done with neutrinos and it's been confirmed. Mia Radhi, why gravity attracting everybody? Can you explain? Well, Einstein ने जो concept दिया था gravity का, ये gravity basically कैसे आती है कि आप मान लो इस यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में एक फैब्रिक है ऑफ स्पेस टाइम. जब कोई ऑब्जेक्ट है इस फैब्रिक में, ऑब्वियसली इस फैब्रिक को वार्प करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट वार्प इस वार्प रीजन में आएगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा. दैट वाज व्हाट आइंस्टाइन सेड. अब क्वांटम मैकेनिक्स में ग्रेविटी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दैट इज क्वाइट अ प्रॉब्लम. लेकिन बेसिकली व्हाट विल हैपन इज, जब हमारे पास एक कंप्लीट यूनिफाइड थ्योरी होगी, वी कैन सी मोर डिटेल वे कि एक्चुअल में ये वार्पिंग कैसे होती है, या फिर अगर हम बहुत ही से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं, लाइक ऑन द स्केल्स ऑफ प्लैंक लेंथ, तब ये सब कैसे होता है, वी कांट अंडरस्टैंड इट बाय जनरल रिलेटिविटी. सो ग्रेविटी को इस अभी हम क्लासिकल तरीके से ऐसे ही समझते हैं कि इसलिए अट्रैक्ट करती है क्योंकि दिस इज जस्ट द कर्व रीजन बिटवीन ऑल, दिस इज द कर्व्ड स्पेस टाइम दैट्स कॉजिंग ऑल ऑफ इट. लेकिन टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रेविटी, ये हम समझ गए, बट वी कैन नॉट बी स्टिल 100% श्योर until we have a quantum theory of gravity. Nirman Khan, that's very good explanation. Oh, thank you. And here's Shivam Yadav official. What is dimension? डायमेंशन बेसिकली होता है, पहले तो क्लासिकल वे में अगर हम लोग देखें, डायमेंशन इज द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. यानी कि आप 3 नंबर्स लो जिससे आप किसी भी बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकते हो. आप 3 नंबर्स से किसी भी बॉडी को बता सकते हो वो बॉडी है कहाँ. तो ये 3 नंबर्स बहुत ही यूजफुल हैं. दैट्स व्हाई इन 3 नंबर्स को, इन 3 काइंड की क्वांटिटीज को जो कि एक नंबर्स के फॉर्म में आते हैं, इनको हम लोगों ने डायमेंशन कह दिया. You can call it the length, breadth and height. These are just dimensions, right? 3 dimensions है. बाद में जब relativity आया, modern physics आया, then what basically happened कि अगर आपको बताने कोई बॉडी कहाँ है, तो आपको ये भी बताना होगा वो बॉडी उस पोजीशन पे कब है. तो आइंस्टाइन ने बताया कि ये
इन 3 नंबर्स के साथ यू नीड एन एडिशनल नंबर, द टाइम डिमेंशन। तो टाइम भी एक डिमेंशन है। तो आप जो भी नंबर्स यूज कर रहे हो ये बताने के लिए कि कोई भी बॉडी कहाँ है एंड किस मोमेंट पे उस जगह है, तो दैट इज अ डायमेंशन। दिस इज जुबल साहो। क्या जनरल कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स से बीएससी करके फिजिसिस्ट बन सकते हैं? हाँ, स्टिल बन सकते हैं, बट लिसन, अगर आप बहुत ही अच्छे कॉलेज जाते हो लाइक दैट स्टैनफोर्ड, एमआईटी, ट्रिनिटी, ऑक्सफोर्ड एंड ऑल, कैम्ब्रिज, तो वहां से पॉसिबिलिटी होती है कि यू कैन गेट बेटर ऑप्शंस, बेटर लैबोरेटरीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। लेकिन अगर आपके पास रियली में वो डेडिकेशन है, पैशन है, so even आप कोई भी कॉलेज में हो, you can still be a great physicist. Like, leave about college, stop talking about college. Einstein थे the so great physicist, the greatest physicist of the 20th century. Instead, he was a patent clerk at Swiss patent office. He didn't have a very great job, he was a third class clerk, and उन्हें तो इस जॉब को भी फाइंड करने में इतनी डिफिकल्टी हुई, लेकिन फिर भी what he did was revolutionize entire physics. Here is Ganesh Kicharde. Since photons are massless, then how, according to relativity, if something moving with the speed of light then become infinitely massive, isn't it contradicting? How? Well, जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, ऑब्वियसली उसका मास इनफाइनाइट हो जाना चाहिए, दैट इज द रीजन कोई मूव नहीं कर पाता। लेकिन जो फोटॉन्स हैं, दे आर क्वाइट स्पेशल, कि फोटॉन्स इवन इफ दे आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, फोटॉन्स कैन स्टिल बी मासलेस। हाँ, फोटॉन्स के पास, लिसन, इनिशियल कोई रेस्ट मास नहीं होता है, इसलिए उनके पास कोई फाइनल मास भी नहीं होता है। मास किसी भी ऑब्जेक्ट के पास तब होगा when they are in motion, जब उनके पास एक इनिशियल रेस्ट मास होगा, लेकिन फोटॉन्स के पास कोई रेस्ट मास नहीं। बट व्हाट फोटॉन्स हैव इज मोमेंटम। बिना मास के भी फोटॉन्स के पास मोमेंटम होता है। Vikas, you are looking cute in glasses. Thank you. And Shivam Yadav official, what is biggest invention of Newton? Well, I can't say about invention. अगर discoveries की बात करूं, so Sir Isaac Newton, every of his research has been groundbreaking, has been so fascinating, and every of his research is so important in the foundation formulation of physics. लेकिन most important की बात करूं, so that's gravity. बिना gravity को understand किए हुए we wouldn't have done this much. या फिर even if I'm talking, gravity was, I guess, the most fascinating discovery that I can say. लेकिन the most important that I would say is F equals ma, the most important single equation of in physics. And ये single equation F equals ma, यानी कि उनके laws of motion, this caused the entire industrial revolution. This has been the most important discovery, as I can say, in physics. Okay, simple editor NH3. I am now at class 12 and I have no more knowledge about class 11 physics. What should I do? What should I do now? I mean, what topics I have to read to complete class 12? अगर आपको basic knowledge भी होगी class 11th की, so you can still cover class 12 के part, like you need to know what are dimensions, तो आप easily cover कर सकते हो. So it's just some basic knowledge. लेकिन अगर आप किसी competition की preparation करें, like that's JEE, that's NEET, और समथिंग अदर कंपटीशन, तो आपको 11th की नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिवाइड योर टाइम, ये इतने टाइम आपको क्लास 12 का पढ़ना है, एंड उसमें से 3 घंटे 4 घंटे पर डे यू हैव टू कवर योर क्लास 11th। कि ऐसा नहीं होगा कि आप कंप्लीटली भूल गए, आपको कंप्लीटली फिर से शुरुआत से करना पड़ेगा, इवन इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम द बिगनिंग। लेकिन कवर करने के लिए इन वेरी लेस टाइम व्हाट यू कैन डू इज कवर, क्योंकि आपको बस वो सब रिकॉल करना है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट recall all these things, right? You don't have to understand it well again. Once you read it, you will be done with that. So आप एक separate time रख लो in which you'll be just reading class 11 का syllabus, recalling all of it, and there are so many one shot lectures on YouTube. You can go and watch them, so it is still possible. Here's Shivam Yadav official, please explain black body. And here is again Kaf Khan, what do you think about black body? So there have been by 2 persons about black body. Well, black body एक ऐसी body है जो कि जितनी radiation absorb करती है, उतनी radiation emit भी करती है. That is a black body.
कि जितनी वो एब्जॉर्ब करेगी उतनी रेडिएशन एमिट करेगी, यानी कि एक परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड अ परफेक्ट एमिटर। लेकिन प्रॉब्लम क्या कहा जाती है, व्हाई इज इट कॉल्ड ब्लैक बॉडी, कि ऑल्दो ये रेडिएशन एमिट करती है लेकिन ये रेडिएशन हम देख नहीं सकते। That is why it is called black body. This can be in the infrared region, in the infrared spectrum of light of wavelengths and frequencies. That is the reason इसे एक black body कहा जाता है। Meet Adi. Can you explain E equals mc square? Albert Einstein can't properly explain to it. E equals mc square basically एक इक्वेशन है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी एंड मैटर होता है, इन सिंपल वर्ड्स, कि जो हमारा एनर्जी होगा, यानी कि एनर्जी व्हाट यू आर यूजिंग, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, वो भी एक फॉर्म की एनर्जी है। सो ऑल ऑफ दिस एनर्जी, ये कुछ नहीं है बल्कि एनर्जी और मास, यानी कि व्हाट वी आर ऑल मेड ऑफ, ये सेम चीजें हैं। एनर्जी एंड मास बस सेम चीजें हैं। जैसे एनर्जी को आपने डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर दिया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, बहुत सारे पार्ट्स में आपने इसे ब्रेक कर दिया, लेकिन ये सारे इन दी एंड है एनर्जी। दीज आर ऑल इक्विवेलेंट, द सेम ऑफ फॉर्म्स ऑफ वन अनदर। जैसे आइंस्टाइन ने क्या बताया कि ये जो एनर्जी है एंड मास है, ये भी इन अ वे सेम चीजें हैं, इक्विवेलेंट है। तो आप 1 किलोग्राम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, बट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास कैन लीड टू अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लाइक अगर आप 1 किलोग्राम एनर्जी को मास को कन्वर्ट करो एनर्जी में, सो यू कैन हैव 9 into 10 power 16 joules of energy. Here is Pushpa Plata Sharma. What is best hours to study? Well, best hours to study, first of all, to be very honest, पहली बात तो whenever you want you can study. For different persons it is different time. लेकिन हाँ, if I'm talking about it, तो जहाँ पे जिन hours में बहुत ही peaceful होता है, so that is better. तो वो हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डे में होता है, कुछ लोगों के लिए नाइट, लेकिन नाइट बहुत पीसफुल होता है, तो यू कैन स्टडी इन नाइट। या फिर अगर डे में, तो डे में आई गेस बेस्ट आवर्स होते हैं नून के, राइट, क्योंकि नून में मोस्टली पीसफुल होगा। मॉर्निंग में देयर कम्स अ लॉट ऑफ नॉइज। हाँ, अगर बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में, लाइक यू कैन गो 4 और 5, तो वहां पे 4 o'clock 5 o'clock वहां से बहुत पीसफुल होता है। बट व्हेन यू रीच टू 10 and 11, तो दिस बिकम समथिंग नॉइजी। लेकिन फिर से 1 and 2 के अराउंड ये थोड़ा और पीसफुल हो जाता है, राइट, एंड देन अगेन इवनिंग देयर कम्स लॉट ऑफ नॉइज, एंड फिर नाइट में पीसफुल हो जाते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज, या तो आप नाइट में बहुत ज्यादा पढ़ लो या फिर शुरुआत में ऑफ द डे। सो इधर यू स्पेंड योर वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ नाइट स्टडिंग, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि दिन की शुरुआत में लाइक 4 और 5 आप पढ़ो, एंड बाद में नून में पढ़ सकते हो, लाइक 1 और 2 के अराउंड यू कैन स्टार्ट। And here is Chaitanya Lipne. How mass changes at the speed of light? Well, it changes really fast. It gets converted really fast. कि क्या होता है कि पहले तो आप करो कि आपके पास नॉर्मल स्पीड है, मास इज लाइक नॉट चेंजिंग, इट इज लाइक रियली नॉट चेंजिंग। दैट्स व्हाई तो एक पहले एक रूल था कि हाँ, मास डजंट डिपेंड ऑन स्पीड, क्योंकि हमारे पास उतनी हाई स्पीड है ही नहीं, इनफैक्ट उस टाइम थी नहीं, अभी है, right, not for ordinary speeds, but yeah, for electrons and all in large hadron collider and all, and we see ki mass actually changes. So mass changes at a very quick rate, at a very fast rate. Up 99% of speed of light pe dekho, so mass will increase to so much high value, you can increase more. So it isn't just directly proportional with the speed that you are moving. Indeed, ye usse bhi fast rate se mass increases. Okay, and here is Ravikant Karma. Sorry, Verma. Really sorry. Can you explain electric dipole? Well, एक electric dipole एक ऐसा kind का से instrument, I want actually say एक instrument, एक ऐसा system होता है जहाँ पे आपके पास 2 charges हैं. You just have 2 charges. आपके पास दोनों charges के magnitude same है, and charges के sign opposite है, यानी कि उनकी जो polarity है वो opposite है. उनको हम लोगों ने कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, स्मॉल डिस्टेंस कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस।
जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो सकता है, एंड दैट इज द सिस्टम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। लाइक एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग, सो दैट इज आपने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को एक छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, दोनों के पास सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है but polarity opposite है, that becomes the system of an electric dipole. That's why most of the molecules are also, which are called polar molecules, वो permanent dipoles होते हैं. Okay, and here is ITZ Ashish, why does mass and gravity affects time? Well, mass and gravity कहने की जरूरत नहीं है, rather mass is high, so gravitational field is also high, so let's have just with one of them, gravity. ग्रेविटी टाइम को कैसे अफेक्ट करता है? लेट्स से वी हैव द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, यहाँ पे कर्व्ड है क्योंकि कोई मास है जो कि ग्रेविटी क्रिएट कर रहे हैं इन दिस कर्व्ड पार्ट, यहाँ पे ये कर्व्ड है, यहाँ पे एज वी आर मूविंग अवे ये फ्लैट है, तो ये जो फ्लैट पोर्शन है यहाँ पे टाइम अपनी ओरिजिनल फ्लो से चलता होगा, क्योंकि इट इजंट जस्ट द फैब्रिक ऑफ स्पेस, से विजुअलाइज करना अलोंग विथ टाइम डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेस को विजुअलाइज करना इट्स रियली इजी, टाइम के साथ डिफिकल्ट हो जाता है, but we have to do it if we are actually studying physics. तो यहाँ पे flat portion है, then that is time अपनी original flow से चल रहा है, original rate से. यहाँ पे जो curved portion है, especially as we are going deeper and deeper in higher gravitational fields, तो यहाँ पे जो curved portion है, जहाँ पे gravity high है, तो वहाँ पे जो time high है, let's leave space है यहाँ पे, but we are focusing on time. तो वहाँ पे warpage of time higher है, जितना टाइम डिस्टॉर्ट होगा उतने ही कम रेट से फ्लो होगा. दैट इज द थिंग, दैट इज हाउ ग्रेविटी warps टाइम एंड दिस affects time dilation. Okay, so Archana Gupta, have completed my BSc but my physics is not so good, please tell me how to read any book so that my physics can be good. अब फिजिक्स अगर आपकी अच्छी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, दैट इज द रीजन यू आर नॉट गुड एट फिजिक्स. मोस्टली जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि फिजिक्स अच्छी नहीं है, सो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे नहीं होते, राइट? सो यू कैन इम्प्रूव ऑन योर मैथ्स, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में फिजिक्स के कंसेप्ट्स ही नहीं समझ आते, राइट, अगर आपको फिजिक्स के कंसेप्ट्स ही नहीं समझ आते, सो बेसिकली इन दैट केस व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज try to read as many books as possible, attend as many lectures as possible, and that is how you learn physics. आपको hard work करना पड़ेगा, and that is how you actually learn physics. You have to be dedicated towards physics. You have to think कि कैसे physics works all the places, and that is how you understand physics. That's Tejas. Hi, and you're really back after a real long time. Okay. Atyush Yadav, please tell why does the mass of a body change when it travels with the speed of light? Well, mass of the body change करता है. We don't have a real exact answer, लेकिन what we can say is कि mass of a body change करता है ताकि nature अपने rules को protect कर सके, क्योंकि अगर mass of the body change नहीं करेगा, जब भी कोई object कोई भी mass travel करेगा, तब basically क्या होगा कि अगर मास चेंज नहीं कर रहा, सो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली हम उस ऑब्जेक्ट को हाई एंड हाईएस्ट स्पीड तक एक्सेलरेट कर सकते हैं, एंड इन द एंड हम उसे स्पीड ऑफ लाइट तक एक्सेलरेट कर सकते हैं, व्हिच शुडंट बी हैपनिंग, क्योंकि तब नेचर के रूल्स ब्रेक कर जाएंगे. देयर विल बी नो मीनिंग ऑफ टाइम, देयर इज नो मीनिंग ऑफ टाइम. तो बेसिकली क्या होगा, ऑब्वियसली वी डोंट वांट दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स टू हैपन, एंड दैट इज द रीजन मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इंक्रीजेस, ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं कर सके. Tejas, I had a problem, so I decided to step back and watch over. Oh, I see. Here is it's Ashish, from where I should start studying astronomy. Well, astronomy को understand करने के लिए भी you need a lot of physics, not just I will say not lot of pure physics. आपको कुछ important concepts आने चाहिए, right? But that is still quite a lot of physics. तो पहले आप अपनी physics strong करो, maths strong करो. Once you are good with physics and mathematics, तब आप कोई भी अच्छी से astronomy की book pick up कर सकते हो and try reading those kinds of stuff like about stars, planets and all. Astronomy basically deals with planets, right? Yeah, that is a key difference between astronomy and astrophysics. Astronomy try to locate
कि कोई भी स्टार कहाँ है, कोई भी प्लैनेट कहाँ है, कैसे हम किसी भी स्टार प्लैनेट को ढूंढ सकते हैं, हाउ इट इज रेडिएटिंग एंड ऑल. एस्ट्रोफिजिक्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये स्टार या प्लैनेट बना कैसे. दैट इज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स. हाँ, लेकिन दिस इज ट्रू कि वॉल्टर लेवन ने अपनी बुक में स्टेट किया फॉर द लॉ ऑफ फिजिक्स कि एवरी सिंगल फिजिसिस्ट हु एवर वॉक्स ऑन अर्थ हैज अ लव फॉर एस्ट्रोनॉमी, एंड दैट्स ट्रू फॉर एवरी फिजिक्स एंथुसियास्ट. Here is Ravikant Verma. आप कहाँ से हो? I want to meet you. Well, मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ in उत्तर प्रदेश. So you can meet me here. Here is Kanak Sharma, from whom you are inspired. मैं बुक पढ़ रहा था प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग की, and that is from where I am actually inspired to come into the field of physics. So you can say in a way Professor Stephen Hawking, and मैं सर आइजैक न्यूटन से भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ. Like in that time what he achieved actually, कि उन्होंने gravitational force की डिस्कवरी की and all, how even his thought went over that, and in the end जो उन्होंने gravitational force मतलब उस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए what conclusion he gave, कि जो हमारे अर्थ पे रूल्स हैं वही रूल्स इन द हेवेंस अबव में भी हैं. That is unifying the laws of the heavens and the earthly laws. So that was a great leap for humankind. So that is, Sir Isaac Newton has been a great inspiration for me. Okay, Preetpal, why Gauss law is applicable only in closed surfaces? So the question is, how can we even apply Gauss law in open surfaces, the surfaces that are not closed, right? तो अगर कोई surface closed नहीं है, इवन अगर कोई surface closed है, जब तक कोई चार्ज इनसाइड नहीं है, there is no electric flux, तब तो कोई electric flux है ही नहीं. Rather आप इमेजिन करो कि आपके पास यहाँ पे कोई भी ओपन surface है, you don't have a cube, you don't have a sphere, cuboid or something, आपके पास एक square है, एक square sheet like this, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, स्क्वायर शीट है, जितनी फील्ड लाइंस यहाँ पे इंटर करेंगी उतनी ही लीव करेंगी. देयर इज नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स. यही आपके पास आसपास अगर एक क्यूब होता, जितनी फील्ड लाइंस इंटर करेंगी उतनी लीव करेंगी, यू स्टिल हैव जीरो फ्लक्स. अगर आपके पास क्यूब के अंदर एक चार्ज है, तब जितनी फील्ड लाइंस इंटर करेंगी उतनी लीव नहीं करेंगे, बल्कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तब उससे एक्स्ट्रा फील्ड लाइंस क्यूब को लीव करें, नेगेटिव है तो एक्स्ट्रा क्यूब के अंदर जा रही है. And that is where Gauss's law comes into place to relate the flux, the charge and the constant, that is epsilon naught. इसलिए there is no point in applying Gauss law for open surfaces, क्योंकि that you just directly have zero flux. It's Ashish. Thank you, really helped me a lot. Oh, welcome. Here is Ishmeet Nigam. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली? वेल, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी आई थी, फिर प्लैंक की क्वांटम थ्योरी आई थी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट इज वेव्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि मैक्सवेल ने दिया था. प्लैंक की क्वांटम थ्योरी में लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, एंड ऐसे पार्टिकल्स जिनके पास एक क्वांटम ऑफ एनर्जी होती है. दोनों थ्योरी सही है, बल्कि मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स में लाइट कभी कभी लाइट, वैसे एनर्जी तो लाइट के पास हमेशा एक क्वांटम होती है, लेकिन लाइट पार्टिकल भी हो सकता है, वेव भी हो सकता है. दैट इज दोनों ही थ्योरी सही है, एंड क्वांटम मैकेनिक्स अराइजेस अ लॉट इवन फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. Okay, here is Vital Rastogi. Bro, what is antimatter and what if antimatter contact with matter? And also, what is the difference between antimatter and dark matter? वेल, एंटी मैटर होता है वो मैटर जो कि एंटी पार्टिकल से बना होता है. एंटी पार्टिकल्स कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास उनके रियल पार्टिकल्स के सिमिलर कुछ फीचर्स होते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स जो कि डिफरेंट हो सकते हैं वैसे होते हैं. लाइक से अगर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए एक एंटी इलेक्ट्रॉन, जैसे पॉजिट्रॉन कहा जाता है, उसके पास सेम मास है एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लेकिन चार्ज ऑपोजिट है. एंड रिमेंबर, जब एंटी मैटर एंड मैटर कोलाइड करते कांटेक्ट में आते हैं, सो दे क्रिएट प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है व्हेन एंटी मैटर एंड मैटर आर कमिंग इन कांटेक्ट. इनफैक्ट एंटी मैटर इज द कॉस्टलीस्ट मटेरियल ऑन अर्थ. इसे अभी तक ग्राम्स में भी आई गेस प्रोड्यूस नहीं किया गया. देयर आर जस्ट 3 places on अर्थ वेयर एंटी मैटर इज फाउंड,
and just a single gram of antimatter costs $62.5 trillion. That is, and antimatter is a real explosion material. जहाँ बात करें antimatter and dark matter के बीच का difference, antimatter फिर भी create किया गया है in the laboratories, यानी ये just एक opposite kind का matter है, matter का opposite, right? जो कि matter के साथ कोलाइड करेगा, कांटेक्ट में आएगा, सो इट रिलीजेस प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ इक्वल्स mc स्क्वायर. लेकिन डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो कि अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है, एंड वी स्टिल डू नॉट नो अ लॉट अबाउट डार्क मैटर कि एक्चुअल में है क्या. बट वी नो कि डार्क मैटर एग्जिस्ट, एंड ये हो सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ, और ये उतना ग्रेविटेशनली या फिर इन अदर वेज ये इंटरैक्ट ना करे, बट इट हैज ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. ऑब्वियसली डार्क मैटर क्या ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑन दिस यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है. Ravikant Verma, will you not teach us after your class 8? Obviously, I will always try my best to continue the channel. Here is Mr. Parabola, and that's a really great thought. If we concentrate the whole mass of Earth into a small piece of marble, there will be a formation of black hole? Well, yes, there will be the formation of a black hole. Well, लेकिन पहली बात तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है करना, राइट? क्योंकि जब हम लोग ऐसा करेंगे, वी कैन गो टू लॉट हायर डेंसिटीज. बहुत ऐसा हो सकता है कि वी कांट एक्चुअली कंप्रेस इट नो लॉन्गर. लेकिन अगर हम ऐसा कर सकते हैं, सो या दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक होल. लेकिन हाँ, दैट कैन आल्सो बी पॉसिबल दिस काइंड ऑफ थिंग, कि जब ऐसा होगा, सो दैट इज अ काइंड ऑफ singularity जिसे हम देख सकते हैं, which is contradictory, but there will be some ways for nature to prevent that from happening. So that will be indeed a formation of black hole. Tejas, these same questions every day on every comment section. Everyone waiting for your reply for you to prove them. Do you not get annoyed? Well, no, not at all. Aditya Sharma, what do you think about the God particle? Well, जो God particle होता है, God particle basically एक ऐसा kind का particle है जो कि create होता है जब God जो हमारी Higgs field है उसमें fluctuations होती है. जो God particle है, इसका original name Higgs boson है, and it was just for fun simplicity ऐसे God particle name कर दिया गया. It is not something very much related to that kind of concept, but yeah, a brilliant discovery. And इसके लिए पीटर हिग्स वाज आल्सो अवार्डेड नोबेल प्राइज. तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो हिग्स फील्ड है, इट इज बिलीव्ड एंड इट हैज बीन इवन डिस्कवर्ड कि जो हिग्स फील्ड है, सारे पार्टिकल्स इन दिस यूनिवर्स, सारे मैटर इन दिस यूनिवर्स अपना मास हिग्स फील्ड से गेन करता है. जितना ज्यादा हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करता है, उतना ही ज्यादा उस पार्टिकल के पास मास होगा. लाइक लेट मी से कि एक प्रोटॉन ज्यादा इंटरेक्ट करता है कंपेयर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन के पास ज्यादा मास है कंपेयर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन. न्यूट्रिनो अट्रैक्ट लाइक डजंट इंटरेक्ट एट ऑल. न्यूट्रिनो इंटरेक्ट्स वेरी लेस, दैट्स व्हाई न्यूट्रिनो का मास बहुत कम है. एंड अ फोटोन, इट डजंट लाइक इवन इंटरेक्ट विद द हिग्स फील्ड, दैट्स व्हाई फोटोन इज मासलेस. तो दैट इज, एंड जब इस काइंड की फील्ड में फ्लक्चुएशंस प्रोड्यूस होती है, तो हिग्स बोसॉन जो कि गॉड पार्टिकल कहा जाता है, प्रोड्यूस होता है. Here is Vital Rastogi. What is delayed choice experiment? Well, I'm sorry, I don't have the idea about that experiment. I'm really sorry. Here is Fazan Bashir, respectively. What is time dilation? Well, time dilation एक ऐसा concept है physics में, especially modern physics and relativity में, जहाँ पे time को हम slow down कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है special relativity में, जहाँ पे हमारे पास एक speed होती है, एंड अगर स्पीड हाई इनफ है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे विद हाई इनफ स्पीड, उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है. दिस इज रियली पॉसिबल, दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन एक्सपेरिमेंट्स. दूसरा भी तरीका है फॉर टाइम डायलेशन, टाइम को स्लो डाउन करने का, एंड दैट इज गोइंग नियर इन अ वेरी हाई ग्रेविटेशनल फील्ड. आइंस्टाइन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जितने हाई ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, उतना ही ज्यादा टाइम स्लो होता है. All things, I'm the same age as you, trying to study about white holes. What is your opinion on white hole?
Well, I don't believe very much in the concept of white hole. Rather, ये भी thermodynamics को in fact contradict करता है, and I wouldn't like anything to contradict physics. लेकिन हो सकता है कि still white holes might exist. जैसे black holes का को भी बहुत opposition थी. Like black holes weren't supposed to be existing after all. Even Albert Einstein himself was against black holes. लेकिन हो सकता है white holes भी exist करते हो, as black holes have been recently yet proven. तो बेसिकली व्हाइट होल्स का एक ऐसा आइडिया है कि जो ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होल्स के अंदर जाते हैं वो व्हाइट होल्स से बाहर आ सकते हैं. एंड इंडीड जैसे ब्लैक होल्स बस रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, एमिट नहीं करते, व्हाइट होल्स बस रेडिएशन एमिट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. सो दिस इज काइंड ऑफ अ वियर्ड बिजार आइडिया, बट दिस माइट स्टिल बी पॉसिबल. फिजिक्स में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लाइक द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल इटसेल्फ. Harium, what is directly proportional or inversely proportional in physics? दो क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब कहते हैं से अगर आपने एक क्वांटिटी का डबल कर दिया तो दूसरी क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी. उस क्वांटिटी का हाफ कर दिया दूसरी क्वांटिटी हाफ हो जाएगी. ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. फॉर मोर डिटेल मैथमेटिकल यू कैन go and check it on Google and YouTube. So I'm not going in very much mathematics here. लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल अब दो क्वांटिटीज तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी. आपने एक का हाफ किया दूसरा डबल हो गया, एक का डबल किया दूसरा हाफ हो गया, एक का 1/4 किया दूसरा 4 टाइम्स हो गया, एक का 4 टाइम्स किया दूसरा 1/4 हो गया. सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एंड आई गेस देयर हैव बीन ऑलरेडी आंसर्ड a lot of questions and it's been 41 minutes and 40 seconds already, and आज really it was so much fun to talk to you all guys after such a long period. So we'll be back live again, and that was all for today, and thanks to you all this.